Welcome back to my channel everyone. I am Rakan watching my YouTube channel Vlogger, and if you have not subscribed yet, consider subscribing and don't forget to turn on the notification bell for further updates. Good morning from Ooty. I am sitting at a restaurant near Ooty Lake. Can you see the Ooty Lake right there? Yeah, it exactly looks like the Mirik Lake we have in our West Bengal. So yeah, Ooty Lake is very beautiful. We came here now, we had a breakfast and we'll move out. We'll not go there and we'll do the boating. We'll not do that. We'll just go out and we'll see another lake. That's name is Paikra Lake. I will go there. That's 22 kilometers from here. So I'll go there, I'll visit and I'll show you guys that. So we are तो हम लोग अभी ऊटी लेक से जा रहे हैं पाइकरा लेक, पाइकरा वाटरफॉल, whatever you want to call it, दोनों ही है वहाँ पे. And I think I need to take this right. I need to take this right. And यहाँ के घोड़े के साइज बहुत बड़े हैं. এদিকে কি থাকবে? We came to the Paikra Lake and that's the lake over there. Well, that's the waterfalls. 20 rupees per person for the entry, and the Paikra Lake is 1.5 kilometers down. And yeah, I will go there probably next time. This is the chocolate museum and we are gonna visit this one. Oh yeah. ये चॉकलेट का फैक्ट्री है. चॉकलेट का फैक्ट्री है ये. चॉकलेट फैक्ट्री. Thank you. Come out of the way, they'll make a video. Amazing.
now. अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन नीलगिरी रेलवेज देखने। इस ऊटी का रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर है एंड टॉय ट्रेन दार्जिलिंग जैसा ही चलता है यहाँ पे। मैंने बहुत सुना है साउथ इंडिया के टॉय ट्रेन के बारे में, लेकिन कभी देखा नहीं। सो इस बार आई हैव गॉट अ चांस टू सी द टॉय ट्रेन ऑफ द साउथ। लेट्स गो। हम लोग अभी जा रहे हैं लंच करने एंड इट्स 5 PM, वेरी ब्यूटीफुल वेदर एंड यहाँ पे के ईज रेस्टोरेंट बोल के रेस्टोरेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है। सो वी आर गोइंग देयर टू हैव लंच बेबी। 5 hours later. So guys, it's 10 o'clock at night and we have after the lunch we went to this cafe and spent some time over there, and now we are moving on to Mettupallam because we are not going to stay in Ooty tonight. We have thought of staying in Ooty tonight, but for some weird reasons I can't stay in Ooty, so we are moving on further to Mettupallam, which is around 50 kilometers from here. It's 10 o'clock. We'll reach around 12 in the night. Cool enough, yeah. I don't have any problem with that because I can say I'm a midnight rider maybe. I can ride all through the night. I don't have any problem with that. So yeah, Mettupallam, yeah. Cute name. So Mettupallam, here I come, and tomorrow morning we leave for Munnar. Cool enough, right? Very cool. Okay, chalo. Just look at the condition of the road. Way too much fog, babe. So I thought the road is good, so I can reach in an hour 50 kilometers, but I don't think it's possible now. Not an issue. I am very cool with it. I have a habit of riding in the fog because I am from Siliguri and I go to Darjeeling often, and then Darjeeling is very famous for its fog. It's very famous for its foggy weather, so I am very much habituated with it. And fog में चलाने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दिखता बहुत कम है, लेकिन I have a habit. Yeah, too many trucks in this road. तो मैं but road conditions are really good, भाई। मतलब roads are good, so I can do at least 50-60 kilometers an hour. So if ऐसा रोड रहे तो मैं 1 घंटे में पहुंच सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Talking about Ooty, Ooty is beautiful, man. As I'm a guy from the hills, मैं पहाड़ों में बड़ा हुआ हूँ। जितना भी समुंदर घूम लूँ, जितना भी शहर घूम लूँ, हिल्स मुझे अलग ही लेवल का अट्रैक्ट करता है। एंड ऊटी ने भी सेम किया मेरे साथ। तो ऊटी also gave me a lot of memories. So yeah, a big thumbs up for Ooty. Okay, so it's 11:36 at night. 30 kilometers done. 25 more odd kilometers to go, and the roads are, you can see, woohoo! Crazy night, man, crazy night. Car section at the middle of the night. It's 11:37, and the weather is quite hot right now, and मैंने सब liners वगैरह पहन लिया, इसलिए I'm feeling a little bit hot. Anyways, that's a part of the traveling. So I can stop here in the middle of the jungle to open the liners. That's not really safe. क्या हिंदी किधर से आ रहे हैं आप? वेस्ट बंगाल, अभी ऊटी से। ऊटी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं आप? मट्टुपल्लम मीठू पड़े तो कन्याकुमारी, देन बैक टू बैंगलोर।
ओके राइड राइड ऑल इंडिया कितना दिन 28 डेज। रात को 1 बजे हम लोग मेट्रोपोलियम पहुँचे एंड कैसे भी करके एक होटल का जुगाड़ किया। वहाँ पे ज़्यादा होटल्स नहीं थे, एक होटल मिला जो खुला था, वहाँ पे जाके नाइट स्टे किया। होटल का हालत बहुत ही गंदा था, कैसे भी करके उस रात वहाँ पे रुक के देन अगले दिन हम लोग निकल गए मुन्नार के लिए। सो अगला एपिसोड होगा मुन्नार का। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।